What's up, you beautiful people? So, today we're gonna do a quick, I won't say a review, but okay, I won't even say a tour guide, but I'm just gonna be showing you around this beautiful resort called Sentara Ras Fushi Resort and Spa in Maldives. So, if you're planning Maldives, this is one resort that you must look at. Have a look at options, but इसको जरूर देखना. Have a look at the pricing. I am currently in Maldives and this is one of those most beautiful resorts that I've been to. Brilliantly done up. So let me show you what exactly this resort is. So right now Maldives is a little windy. तो शायद कहीं ना कहीं wind noise बहुत high होगा तो आपको थोड़ी परेशानी होगी. But let me see how the whole video goes. Yeah, let's start off. So this particular resort is only a small, I'd say about 20 minutes speedboat ride from the airport. So this is where I'm right now standing at the main airport. No, not airport, the hub, like the entrance of the resort. So there are these speedboats and this is the beauty. Yeah, so let me start from here. This is where you enter the resort. They've got fantastic branding, Sentara Ras Fushi Resort and Spa. So it's, as soon as you enter, there's a lot of sand everywhere. So this is the first time that I've ever seen a resort that has sand in restaurants and in the lobby, like the main reception area. Very, very rare to see something like this. But it was crazy. Before I show you the reception area, a little bit about this resort. So it's one of those typical resorts in Maldives जहाँ आपको room की category जो आपको लेनी है, that would depend on say either you have a beach villa. So what exactly is a beach villa? The entrance of your villa straight leads you to the beach. एंड दी अदर एंड यू हैव ओवर वाटर विला. वो मैं आपको दिखाऊंगा. ओवर वाटर विला में भी 3 कैटेगरी है. एक है रेगुलर ओवर वाटर विला जिसमें एक छोटी सी बैल्कनी है वेयर प्रॉब्ली यू कैन जस्ट सिट ऑन द फ्लोर ऑन द डेक. उसके नेक्स्ट है वेयर दे गिविंग यू अ स्मॉल जकूजी. सो इट्स लाइक अ प्राइवेट जकूजी. फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड सिर्फ 2 ऐसे रूम हैं जहाँ पे जकूजी वो लोग ने दिया है प्राइवेट. उनमें से मैं एक में रह रहा हूँ. और जो प्रीमियम कैटेगरी है लास्ट, दैट इज़ अ स्विमिंग पूल. यस, अ प्राइवेट स्विमिंग पूल. लेट मी शो यू. दिस इज़ अ स्मॉल लिटिल स्टोर फॉर souvenirs and this is the lobby. Sand. Then there is a small little bar here. Okay, so you know what? When I was showing you the lobby, I realized that Maldives is a place मैं शायद बातें कम करूँगा और आपको वीडियो ज़्यादा दिखाऊँगा. I don't think I really need to talk a lot apart from giving you a little bit of information. But the views are so breathtaking that I'll let the resort speak for itself. Plus यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि wind noise बहुत है. So I might probably just put the volume a little low. Okay, so where exactly? We're at this place called the Silent Beach and Rock Pool. ये भी लोग ने बहुत, यहाँ पे स्विमिंग पूल्स काफ़ी हैं. सो व्हाट देव डन इज़ अ स्मॉल लिटिल बीच. कुछ ज़्यादा शोर शराबा नहीं है. अ स्मॉल स्विमिंग पूल एंड यू हैव पीपल गोइंग क्रेजी विद देयर टैनिंग. एंड या, it's very sunny today. Okay, so this is the gymnasium. आज सुबह मैंने यूज़ किया है. Super well equipped,
everything that you can ask for सब मिलेगा इधर. So the resort has a fantastic vibe where अगर आप नीचे देखेंगे जैसे मैंने आपको पहले दिखाया full sand है. So it's not like one of your typical क्या I don't know like a hotel but spread across. तो बहुत अच्छा लग रहा है. आप अच्छा एक और चीज़ है, do not worry about your shoes. You'll probably wear them at the airport, but once you come here you will straight need shoes when you are leaving. जब आप एयरपोर्ट के लिए वापस जा रहे होगे that's when you would need shoes. This is a very important tip, especially when you don't realize कि आपको क्या पैक करना है. तो ये एक बहुत important है. जीन्स भी जब आप आओगे एयरपोर्ट से that's when you would need it. You will straight need it when you are returning back. You will not need to wear here. यहाँ गंजी पहनो, शॉर्ट्स पहनो and that's about it. Even when you're having खाना at the restaurants, I don't think you would need anything else. So while walking to one of the restaurants, in the midway they have a huge chess board. Hold on. And here on the left you will see these are your regular beach rooms. Let me give you a better look. So beach rooms hai. So these are the entries and I'm assuming they have an exit on the beach side. वो वहाँ से जाके देखेंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा. Right? You see that? So this is the beach room. I think this is the base category. This probably would be cheaper. If I'm not mistaken, this was about 20 to 25,000 a night. And now you straight have access to the brilliant beach. A lot of people, they're all getting tanned. And one of my most amazing spots. Yeah. So right now I'm actually sitting on that awesome swing. Yeah. और यहाँ स्विंग करके मैं आपको पूरा बता सकता हूँ कि इस रिजॉर्ट में क्या है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं. You have any questions, you think you want answers of, what kind of clothes to wear, what season you're traveling, lot of things depend. But हम लोग जिस दिन आए थे बहुत बारिश का माहौल था. It got really windy. अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ बहुत ज़्यादा विंड है, बहुत ज़्यादा, because हर तरीके से ओपन ही है. So that might be a little bit of a problem for some. थोड़ी थोड़ी करके हाई टाइड भी हो रही है, पानी मेरे आगे तक आ रहा है. Let me show you what the bar looks like now. So वो जो दूर आप देख रहे हो, that is the, I think they call it the view bar, right? And वहाँ के लिए walk करने, okay. Plus they have these small little, आपको दिख रहे हैं? I don't know what to call them. Hang on, this. So you can go inside the water, you can sit down, so it feels as if you're sitting in water. Now I'll show you what the view bar looks like. So I don't think a lot of people appreciate me roaming around with this because उनको लगता है जैसे मैं उनको film कर रहा हूँ. So yeah, totally nudity, I don't think that's appreciated in Maldives. So you have to be a little covered up. Where I'm walking now is the view bar. I need to definitely switch the view and show you what it looks like. So this is the ramp that leads to the view bar. यहाँ I think काफ़ी windy होएगा. So I'm going to let this talk less and let the views do the talking. So this on the left is your view bar, and here on the right, these are the overhead or over water villas, the bungalows. There are 80 bungalows this side, 40 on each side.
This is the view bar that I was talking about. Feels beautiful. Very well done up. Whoa. यहाँ हवा ख़त्म. So it's a little lit up because of अभी New Year's और Christmas गए हैं. This is the view bar. They have seating and they have outdoor seating, which is the most amazing thing. Once you get here, you feel this is bliss. You will be able to spend so much time here. Okay. Yeah. Phenomenal. तो तकिए भी रखे हुए हैं. You can just sit here and relax. It's not entirely 360, but yeah. So there are total 4 restaurants here. One is the Ocean Restaurant, I think they call it. So Ocean Restaurant is 24 hours. Whenever you feel like, you can just walk in there and eat whatever. Then they have a Italian restaurant. Now Italian restaurant में आपको बुकिंग करनी पड़ेगी. They have a Thai restaurant. Thai में भी आपको बुकिंग करनी पड़ेगी. And I think they have a Arabian joint. अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, बाकी सब ट्राई कर लिए. आज रात का डिनर हमारा अरेबियन रेस्टोरेंट में है. सो इट शुड बी फन. बाकी यहाँ का खाना बहुत अच्छा है. आई विल से वेजिटेरियंस के लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है. यू शुड बी एबल टू गेट, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. और अभी मैं आ गया हूँ, आई फॉरगॉट अगेन इसका, वेव्स बार. आई थिंक वेव्स बार. लेट मी शो यू व्हाट दैट इज. सो यहाँ पे थोड़ी वो लोग ने सीटिंग रखी है. एक स्मॉल लिटिल स्विमिंग पूल है और वहीं पे बार है. यू सी दैट? वहीं पे बार होने का बेस्ट पॉइंट यही है दैट एंड आई गॉट, लेट मी एडजस्ट इट. ओके, सो यू आर राइट नेक्स्ट टू द बीच. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. बिकॉज ये मैं पूरा शूट कर रहा हूँ दोपहर को, तो द सन इज़ सुपर स्ट्रॉन्ग और पानी एकदम ब्लू लग रहा है. Okay, so now I'm gonna walk towards my room and show you what the last category overwater villas कैसे लगते हैं. एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. If you, this is where I'm walking. People going crazy. अच्छा, this is the exit which I told you. The other rooms जिनके entries are from the beach itself. Oh yeah, a lot of people sunbathing, a lot of people chilling, a lot of people taking it easy. Wow man, seriously, एक बार आओगे ना, you would not want to leave this place. It's that amazing. It's amazing on to another level. Okay, so there are a lot of motor sports also available here, water sports available. So if you come in for an all-inclusive package, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, उसमें आपको नॉन मोटराइज स्पोर्ट्स सब फ्री मिलेंगे. बट अगर मोटराइज स्पोर्ट्स होंगे तो फॉर दैट यू माइट हैव टू स्पेंड अ लिटिल मनी एंड दैट डजंट कम चीप. ओके, ये बंदा क्या कर रहा है? आई हैव नो आइडिया. सो गया है? वाओ. दिस अगेन नाउ लीड्स टुवर्ड्स द अनदर सेट ऑफ वाटर बंगलोज. ये वही हैं बीच बंगलोज जिसे इन्हों कहते हैं, बेस कैटेगरी के. ओके, सो वाइल वी आर वॉकिंग, आपको क्विकली बताऊं, आपको यहाँ पे 3 पैकेजेस मिलेंगे. ए, यू कम विथ योर जस्ट योर रूम इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट, विच मोस्ट पीपल जनरली डू. बट इन Maldives it's always advisable, if you want to go ahead with
either your lunch option or your dinner option. So अगर full dinner and lunch तीनों meals लेंगे तो उसको full board कहते हैं, and half board will be only breakfast and dinner. I will advise you go in for the full board because आप रेस्ट कहीं और जा ही नहीं सकते मॉलीज में. This is your resort and this is where you need to spend your entire trip. तो आपके पास बाहर जाने की जगह ही नहीं, you don't have options to explore. तो बेटर है कि आप फुल बोर्ड लीजिए, सारा पैसा भर दीजिए, सो यू डोंट हैव टू वरी. वाह, नाउ दिस रैम्प लुक्स अमेजिंग. मेरा वाटर बंगलो है सबसे लास्ट वाला, सो दैट्स वेयर वी वॉक टू. सो मैंने लिया है ऑल इंक्लूसिव प्लान, मतलब फुल बोर्ड प्लस ऑल इंक्लूसिव. दैट मीन्स ऑल माई अल्कोहल ड्रिंक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. Wait a moment, let me get back to you shortly. यहाँ पे थोड़ा सा विंडी है. अगर आपको याद होगा तो मैंने जो आपको जिम दिखाया था, जिम और वो एक छोटा सा स्विमिंग पूल, वो ये रहा. वाओ, गॉर्जियसनेस एवरी सिंगल प्लेस. सनसेट होने में थोड़ा टाइम है. Okay, so now we are walking towards my room number 2, 1. We will leave that. Hello. Wow, there's a lot of golf carts. That means there's been a lot of check-ins. वैसे आपको ये लोग ड्रॉप सिर्फ जब आप चेक इन करो तब इस गोल्फ कार्ट में आपको ड्रॉप करते हैं. Otherwise you really don't need them. It's all a walking distance. Hey. Like I said, मेरा रूम एकदम लास्ट में है. सो अच्छी खासी जितना खाना खा लो यार, यहाँ वॉक बड़ी अच्छी हो जाती है. 5 बार भी अपने रूम में जाना हो तो यू आर सेट एंड गुड टू गो. राइट नाउ आई विल शो यू व्हाट माय रूम लुक्स लाइक फ्रॉम द इनसाइड. ओके, हैंग ऑन. नाउ लेट मी शो यू. इफ यू कैन सी दैट, those are the typical overwater villas, I'm sorry, जहाँ आपको बैठने की जगह मिल रही है. Can you see that? And वहीं से एक staircase है when you can go down. Right. So when I said the jacuzzi, so there are only 2. One is this one. Can you see that jacuzzi right there? And the second one I'll show you in my room. So इसकी beauty, ये room जो मुझे मिला इतना अच्छा है कि एकदम end में है. So this is it. स्ट्रेट कुछ नहीं. सो मैंने बहुत फ़ोटोज़ यहाँ खींची है. फील्स वंडरफुल एंड वाओ. हेलो मालदीव्स. सो दिस इज़ द रूम. हाय. Oh, that was loud. Just want to give them an overview what it looks like and what they can expect. It's a little messy inside. It's a little messy, but that's okay. Give them a quick overview. Never mind, right? Wow, you're listening to music? Yeah. Okay, so this is your. Hang on, let me just turn this off so that there's no YouTube violations, baby. Yep. I was sleeping. You're sleeping? That's okay. So this is a pretty decent size room. Yep. So this is your table where you can work. We've got our laptop, we got everything, and I'm gonna show you. Whoa! This feels lovely. Hang on, that's right. So this is the jacuzzi that I was talking about. You get a private jacuzzi in this room. You get a private seating and there is someone's chappal floating. People, please take care of your valuables. ये क्या है? Not good. That's the first batch. So yeah, so this is the place where Saloni and I have been having our morning. You can't do that. You'll fall down. This is where we've been having our first cup of mornings at 6:30. And there, if you want, you can just go down and take a dip. No stress. Yeah? Okay. So, last thing, I'm sure ये सेंटारा में आपको मज़ा आएगा. जब भी आओ,
110% this is worth staying. Beautiful place. You're gonna love it. One question that I had in mind, which I'd like to share with all of you, is should you go in for an all-inclusive thing or only full board? Honestly, if you are not into too much of alcohol, अगर आप drinks limit में पीते हो, probably all-inclusive is not for you. Because earlier I was under the impression यहाँ alcohol and food बहुत महंगा है. तो थोड़ा महंगा है, but when you compare it, it's not that much. So a beer is gonna cost you about $4, and your vodka and cocktail drinks are roughly about $10. So आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो. Lunch sweets was about roughly between $10 and $15 a dish. So full board अगर नहीं जाना है, half board जाना है, वो भी आप अंदाज़ा, once you know the pricing, you can be calculative. So drinks, मुझे लगा कि even if I would have not, things would have been okay. Because all inclusive and full board में I think there's a difference of roughly about 25 to 30,000, और शायद उससे ज़्यादा अभी याद नहीं, but roughly मैं बोल रहा हूँ. So yeah, this is all the information that I can give you of this beautiful place. जितना यहाँ देखोगे उतना इस जगह से प्यार हो जाएगा यार, वापस जाने का दिल नहीं करेगा. So till then, till we meet next, मैं कौन सा vlog डालूँगा मुझे भी नहीं पता. But feel free to ask any other questions that you guys might have. Yep, see you later. Bye bye.